So actually, so defect is that is the starting cell of white blood cell and red blood corpuscle is called stem cell. So uh, starting cell, if there is a defect in starting cell of RBC, that is they will lead to uh, immature differentiation or abnormal RBC. Defect in stem cell proliferation lead to the abnormal RBC formation. So depending upon this, that is depending upon the defect of stem cell, we can classify the anemia into following groups. First one is called aplastic anemia. Second one is called pure red cell anemia. Pure red cell anemia. Pure red cell anemia. Next, किसका माइक्रोफोन ऑन है? Anemia of chronic disorder. Anemia of chronic disorder. Anemia of chronic disorders. That is, if there is a kidney disease, it will lead to the anemia. Second is called bone marrow filtration. सर आपका वॉइस रुक क्यों जा रहा? क्या कौन बात कर रहा है? बात करने से मैं क्लास ही नहीं लूंगा, मैं बोल दिया। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ये माइक्रोफोन ऑफ करने को बोलो, मैं तो बात नहीं लूंगा। कोई भी एक काम मैं पूछूंगा तो अभी आंसर देना है, नहीं तो बात मत करना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है। Defect in stem cell proliferation and differentiation. Depending upon the defect of stem cell of RBC, we can classify the anemia into the following groups. First one is called aplastic anemia. Second is called pure red cell anemia. Next is called anemia of chronic disorder. Anemia of chronic disorders. That is, if there is a kidney disease, due to the kidney disease also, it will lead to the anemia. Next, bone marrow infiltration and congenital anemia. Now, you come to the point for what is aplastic anemia. What is aplastic anemia? What is aplastic anemia? What is pure red cell anemia? Can you tell me, anybody idea? What is aplastic anemia? Suman Saurabh. Already we told that defect in stem cell, depending upon the defect in stem cell, we can classify the anemia into the following groups. Now, aplastic anemia. What does it mean, aplastic anemia? Anybody? Also, Suman Saurabh, Ashish, Monish, any idea what is aplastic anemia? No idea. No sir. No sir. Aplastic anemia means, already we told that not defect. You see, defect means different types of defect हो सकता है. So aplastic anemia means there is a abnormal size or shape of rats, that is stem cell. Abnormal, if there is a formation of the abnormal size or abnormal shape of the stem cell is produced from the bone marrow, then it will lead to the
aplastic anemia. It will lead to aplastic anemia. That is due to the formation of the abnormal stem cell, lead to the aplastic anemia. Second is called pure red cell anemia. What does it mean, pure? What does a pure red cell anemia mean? What does it mean? Means there is a accumulation of the excessive iron. If iron is deposited in more or higher concentration in the stem cell, then it will lead to the pure red cell anemia. That is also one type of defect. Defect means excessive iron is accumulated or excessive iron is stored in the stem cell of the RBC. Then it will ultimately lead to the pure red cell anemia. That's why it is called pure red cell anemia. Pure red means excessive iron deposition in the stem cell. It will lead to pure red cell anemia. Next, anemia of chronic disorders means if there is a chronic disease or disorder of certain organs, especially if anybody suffering from chronic kidney disease or acute renal failure or chronic renal failure, then it will lead to the one type of anemia. Why? If anybody suffering from kidney disease, she or he can suffering from anemia. Why? Any idea? If anybody having the kidney disease, she or he will be suffering from anemia. Why? Any idea? Sir, kidney will filter the blood, sir. Also role in the filtration. No. It's not answer. ब्लड सर फ्लूड होते जाता है सर. No answer. No, correct. This is wrong answer. Next, anybody? Any idea? Durant bolo. If not, I will tell. किडनी डिजीज में किसी का किडनी डिजीज होगा तो उसका एनीमिया होगा. Durant. Damn sure. If anybody suffering from kidney disease, it will lead to anemia. Because kidney produce one hormone that is called erythropoietin. Remember, kidney produce one hormone that is called erythropoietin. This erythropoietin is responsible for the maturation of the red blood corpuscle. Maturation of red blood corpuscle. If there is a kidney disease, that kidney unable to produce that erythropoietin. If there is a decreased concentration of the erythropoietin, then RBC will not be matured. RBC will not be matured. That's why kidney disease में जिसका किडनी डिजीज है वो उसका एनीमिया होगा ही होगा, क्योंकि किडनी प्रोड्यूस वन important hormone. The name is called erythropoietin. That erythropoietin is basically responsible for the maturation of the RBC from stem cell. Maturation of RBC from the stem cell. If there is a decrease in concentration of the erythropoietin, the stem cell cannot be converted. The stem cell cannot be converted into the matured red blood corpuscles. That's why the patient has been suffering from acute renal failure or chronic renal failure. She or he has been suffering from anemia as kidney unable to produce the hormone erythropoietin. Kidney unable to produce erythropoietin, क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेगा. ये एरिथ्रोपोएटिन हम लोग का आरबीसी को मैच्योरेशन करने के लिए हेल्प करेगा फ्रॉम स्टेम सेल. इसीलिए जिसका किडनी डिजीज होगा उस पेशेंट को एनीमिया होगा ही. So it is clear that is anemia of chronic disorder means the patient has been suffering from kidney disease like chronic renal failure or acute renal failure or nephrotic syndrome or acute glomerulonephritis. These are the disease of kidney. Any disease of kidney that kidney unable to produce erythropoietin, which is responsible for the maturation of the RBC. So if there is no formation of the erythropoietin, so there is no formation of the matured RBC. So it will lead to the anemia. Next, go for the type bone marrow infiltration. Bone marrow infiltration. Next, congenital anemia. तो मैं bone marrow infiltration में आ रहा हूँ.
तो congenital anemia means that बचपन से ही means जन्म लेने का समय से उसका ब्लड कम है और हीमोग्लोबिन कम है, उस टाइप ऑफ एनीमिया और दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉल्ड congenital anemia. That is, congenital anemia is a condition that is by birth the patient having the low hemoglobin level or low RBC count, that is called congenital anemia. So what does it mean bone marrow infiltration? मैं देख रहा हूँ व्हाट इज बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन. देखो नीचे, देखो यहाँ लिखा है इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है. व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन? यहाँ पे लिखा है, इन्फिल्ट्रेशन क्या लिखा है? सेलुलर और इन्फिल्ट्रेशन सेलुलर और हिस्टोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन. Histiocyte is a cell. Infiltration is defined as an increase in the number of macrophages or histiocyte in the bone marrow. Means जिस टाइम पे हम लोग का that is बोन मैरो में हिस्टोसाइट एक सेल होता है और मैक्रोफेज ये भी दूसरा सेल है, ब्लड सेल है. तो जिस टाइम पे हम लोग का बोन मैरो में मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट सेल का ज्यादा एक्युमुलेट होगा और ज्यादा जमा हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोला? इनफिल्ट्रेशन. मींस accumulation of macrophages, accumulation of the large number of the macrophages or histiocyte in the bone marrow is called as infiltration or bone marrow infiltration. तो इस infiltration होने से क्या होगा? क्योंकि बोन मैरो में ज्यादा हिस्टोसाइट और मैक्रोफेज होगा तो क्या होगा? स्टेम सेल उत्पन्न नहीं होगा due to the large number of the histiocyte or macrophages. Means the large number of the macrophages or histiocyte stop the production of the bone marrow stem cell. That's why it will lead to the reduction of the formation of RBC. Means bone marrow में ज्यादा macrophage और histiocyte जमा होगा तो क्या होगा? रेड ब्लड कॉर्पस्कल फॉर्मेशन के लिए मींस वो रुकेगा. मींस लार्ज नंबर ऑफ द मैक्रोफेजेस मींस ज्यादा मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट बोन मैरो में जमा हो जाएगा तो क्या होगा? स्टेम सेल उत्पन्न नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा. इसलिए स्टेम सेल प्रोडक्शन रुक जाएगा तो क्या होगा? आरबीसी फॉर्म नहीं होगा. दिस इज द मेजर रीजन, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन. So again I am telling what is bone marrow infiltration. Bone marrow infiltration is the process in which large number of the macrophages or histiocyte is deposited in the bone marrow. So due to the excess histiocytes or macrophage lead to stop the formation of the bone marrow stem cell. So ultimately it will lead to decreased production of the RBC. That is called bone marrow infiltration. तो ये हो गया बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट कॉन्जेनिटल तो मैं बता दिया. अभी थर्ड नंबर एनीमिया में आ जाओ. देखो यहाँ क्या लिखा है? एनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन. मींस हम लोग का बॉडी से ज्यादा रेड सेल लॉस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलूंगा? हेमोलाइटिक एनीमिया. हेमो मींस ब्लड, लाइटिक मींस डिस्ट्रक्शन और ब्रेकडाउन. तो हम लोग का बॉडी से जो भी प्रोसेस से ज्यादा आरबीसी ब्रेकिंग होगा उस टाइम पे क्या होगा? ब्लड लॉस होगा. तो दैट इज कॉल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया. तो ये दो टाइप होता है, एक्सट्रिंसिक रेड सेल एब्नॉर्मलिटीज और इंट्रिंसिक रेड सेल एब्नॉर्मलिटीज. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा corpuscular red cell abnormalities and intracorpuscular red cell abnormalities. Means ये क्या होता है? Extrinsic means the size and shape, the external size and shape of the red cell will be abnormal. External features, physical characteristic of the red cell will be abnormal. That is called extracorpuscular abnormalities. दूसरा intrinsic means उसका internal structure. That is, if there is a abnormalities in the
internal structure of the RBC, that is called intracorpuscular abnormalities. Intracorpuscular abnormalities. So this is hemolytic anemia are two types depending upon the physical abnormalities and internal abnormalities of the red cell. Next classification. This is this whole classification under group A classification. ठीक. Now morphological classification. हम लोग अभी तक जितना एक्सप्लेन किया है ये सब आएगा पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. So हम लोग total pathophysiological classification of anemia is discussed. Now I am going to discuss the morphologic classification of anemia. Morphologic classification of anemia. So morphologically anemia are following types. देखो, one is called macrocytic hypochromic anemia. Macrocytic hypochromic anemia. दूसरा होगा normocytic normochromic anemia. Normocytic normochromic anemia or macrocytic normochromic anemia. So come to the point for what does it mean? See here, morphological classification. What is macrocytic? Macro means, what does it mean? Macro? Anybody? छोटा Chuta. Macro means chuta. सूक्ष्म सूक्ष्म लार्ज साइज सर, लार्ज साइज. मैक्रो मतलब लार्ज होता है. हाँ, macro माइक्रो means, तो मैक्रो है. micro means small. मैक्रो हाँ, लार्ज साइज है, साइज Means- लार्ज हो जाता है हाँ, सर. means macrocytic means यहाँ पे रेड सेल का साइज बड़ा हो जाएगा. ठीक. तो मैक्रोसाइटिक मींस यहाँ पे लिखा है देखो, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. So what does it mean? Macro means यहाँ पे रेड सेल का साइज बड़ा होगा. So what is hypochromic? What is hypochromic? Any idea? डिक्रीजमेंट सर. Decrease? हाइपो Decrease, yes, I decrease. उसके बाद सर ठीक है. क्रोमिक सर. बोल दो, अभी आ रहा हूँ. देखो यहाँ पे डेफिनेशन है. यहाँ क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है? देखो ये क्या लिखा है? पढ़ो. कलर कलर इंडेक्स. कलर इंडेक्स व्हाट इज कलर इंडेक्स? देखो कलर इंडेक्स क्या होता है? द एवरेज कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड कलर पैरामीटर और कलर ऑफ पैरामीटर ऑफ ब्लड. देखो यहाँ पे कलर इंडेक्स मींस एक दी है. व्हाट इज कलर इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट into 3 divided by first 3 numericals of RBC count. Means first 3 numericals of RBC means amount of the hemoglobin present in first 3 numbers of RBC. That is called color index. Means ये क्या होता है? इन बेसिकली क्या होता है? 3 RBC में कितना concentration of hemoglobin रहेगा? देखा है? 3 यहाँ पे डिवाइड किया है. मींस अमाउंट ऑफ द आरबीसी प्रेजेंट इन 3 numbers of red blood corpuscle. Red blood corpuscle. There is amount of the RBC, sorry, amount of the hemoglobin present in 3 numbers of red blood corpuscle is called as color index. समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? मींस टोटल 3 आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन रहेगा उसका कंसंट्रेशन को हम लोग कलर इंडेक्स बोलूंगा. अभी कलर इंडेक्स का नॉर्मल रेंज देखो कितना है? 0.1 to 1 यूनिट. अभी यहां से कम होगा तो हाइपोक्रोमिक, ज्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक. समझ में आ रहा है? कलर इंडेक्स का रेशियो देखो नॉर्मल रेंज 0.8 to 1. इससे कम होगा तो हाइपोक्रोमिक और इससे ज्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक. और नॉर्मल रहेगा तो क्या? नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा? कलर इंडेक्स नॉर्मल रहेगा तो क्या क्या बोलोगे? ज्यादा होगा तो हाइपरक्रोमिक, लेस होगा तो हाइपोक्रोमिक, और नॉर्मल रहेगा तो जल्दी बोलो. नो आइडिया. नॉर्मोक्रोमिक. नॉर्मोक्रोमिक नेमाक्रोमिक नॉर्मो तो अभी हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक. जी सर. क्या बात कर रहे? कौन बात कर रहे? अभी देखो, अभी जरा आ जाओ. कहाँ पे हो? हाँ अभी बोलो.
व्हाट इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? अभी बोलो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया? मींस यहाँ पे रेड सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और और कलर इंडेक्स कम हो जाएगा, कलर इंडेक्स कम होगा, इसलिए उसको बोलूंगा जो एनीमिया में रेड सेल का साइज बड़ा होगा एंड द concentration of the color index is low is called as macrocytic hypochromic anemia. समझ में आया? Macrocytic hypochromic anemia is the anemia in which the red cell size is increased and color index is less, is called macrocytic hypochromic anemia. Second one is normocytic normochromic anemia. Normocytic normochromic anemia. What does it mean? Normocytic normochromic means you have a normocytic means नॉर्मल सर। normal size and साइज नॉर्मल होगा, हाँ साइज बड़ा होगा और कलर नॉर्मल होगा। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक मींस साइज नॉर्मल और नॉर्मोक्रोमिक मींस उसका कलर इंडेक्स कम रहेगा, लेकिन टोटल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विल बी लेस। हम लोग को यहाँ पे कलर इंडेक्स क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? 3 आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रहेगा, जितना रहेगा उसको हम लोग कलर इंडेक्स बोलूंगा, लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होगा, उसका आरबीसी का साइज नॉर्मल है और कलर इंडेक्स भी नॉर्मल है, लेकिन टोटल hemoglobin concentration is less than 14.5, तो उस पेशेंट को हम लोग बोलूंगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ रहा है? कलर इंडेक्स मींस 3 आरबीसी में जितना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग कलर इंडेक्स डेजिग्नेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ पेशेंट में उसका आरबीसी नॉर्मल रहेगा और कलर इंडेक्स भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन टोटल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज देन द नॉर्मल रेंज, दैट इज it will be the total hemoglobin concentration is less than 14.5, but if the size of the RBC is normal and the color index is normal but the total concentration of hemoglobin is decreased, that time उस type of एनीमिया को हम लोग बोलूंगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आया नहीं आया? बोलो एनीबॉडी? नेक्स्ट मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मींस रेड सेल का साइज बड़ा होगा लेकिन उसका कलर इंडेक्स नॉर्मल रहेगा, मींस द एनीमिया in which the increase the RBC size but the color index is normal is called as macrocytic normochromic anemia. Macrocytic normochromic anemia. So this is the morphological classification of anemia. It is 3 types. Next. अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एनीमिया बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन। तो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में डिस्कस किया, अभी कुछ इंपॉर्टेंट एनीमिया जो कॉमन एनीमिया होता है हम लोग का उस बारे में कुछ बता दूंगा डेफिनेशन। देखो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट डज इट मीन? एनीबॉडी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट commonly occurring anemia. What does it mean, iron deficiency anemia? hemoglobin. हाँ, and any other answer? सुमन करो आप। सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब कि उसमें हेमोग्लोबिन का परसेंटेज भी कम रहेगा सर, तो वॉल्यूम मतलब। हाँ ओके, तो व्हाई आयरन हीमोग्लोबिन कम क्यों रहेगा? आयरन का कम मात्रा कम होगा तो एनी आइडिया? अंशु कोई आंसर नहीं देता, पढ़ना नहीं आता है। आयरन का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन का क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों होगा? राजेश, डिफरेंट सब दिक्कत हो सकता है पेशेंट हाँ को। क्या क्या?
डिफरेंट टाइप के उसको दिक्कत हो सकता है। क्या डिफरेंट टाइप, ये आंसर नहीं है। मैं बोला आयरन का कमी होगा तो वहां पे दिक्कत क्या होगा, हीमोग्लोबिन का क्या होगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयरन का कम होगा तो कम हो जाएगा सर। कि क्या कम होगा? रेड ब्लड सेल। अरे रेड ब्लड सेल कम ऑक्सीजन हो तो और कमी भी- भी होगा सर, हाँ, ऑक्सीजन का भी कमी हाँ। होगा। ये तो बाद में आएगा यार। हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, आयरन का मात्रा कम होगा तो कहाँ पे इफेक्ट करेगा? ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यह बोला है, कहाँ पे इफेक्ट होगा आयरन का मात्रा कम होगा तो बॉडी में? क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ना। क्यों? हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन व्हाट इज हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन केमिकली बोलो? हीमोग्लोबिन इज ए हीम प्लस प्रोटीन, हीम प्लस प्रोटीन दैट इज ग्लोबिन। देखो यहाँ पे 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद में ये खत्म हो जाएगा, फिर तुम रिज्वाइन करो, ठीक है? 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट करो। Hemoglobin is a red pigment. Basically, hemoglobin made up of heme, nothing but iron plus globin. Globin means protein. तो आयरन, तो हीमोग्लोबिन का हीम बनने के लिए क्या जरूरत होता है? आयरन। तो आयरन का कमी होगा तो उसका हीम का कमी हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन अच्छा से बना नहीं पाएगा ना। If there is a deficiency of iron, that the formation of hemoglobin will be decreased. क्योंकि hemoglobin is a combination of the heme plus globin, heme plus globin. So if there is a deficiency of iron, ultimately what will happen? The hemoglobin is not forming properly. That's why it will lead to the iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia. Next, megaloblastic anemia. What does it mean? Megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia is characterized by red blood cells that are larger than the normal. Megaloblastic, mega means बड़ा, मैक्रो, तो आरबीसी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? Due to the deficiency of vitamin B12 or folate. Due to vitamin B12 or folate deficiency. तो उसको हम लोग विटामिन B12 deficiency और folate deficiency anemia भी बोल सकता है। So megaloblastic anemia is the anemia in which the size of the RBC is increased, large or big size, and it is mainly due to the vitamin B12 and folate or folic acid, folate or folic acid. That's why megaloblastic anemia is also known as vitamin B12 and folic acid deficiency anemia, or you can call it is macrocytic anemia. Macrocytic anemia. Next, go for sickle cell anemia. Sickle cell anemia. What does it mean, sickle cell? Sickle cell disease. Sickle cell anemia का दूसरा नाम होगा sickle cell disease. SCD. SCD. S stand for sickle, C stand for cell, D for disease. So it is a genetic disorder of red blood corpuscle. It is a genetic disorder of the red blood corpuscle. तो यहाँ पे क्या होगा? आरबीसी का शेप डिस्क लाइक हो जाएगा, डिस्क। आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पस का शेप डिस्क लाइक होगा, and it will then it will give the flexibility to travel through even the smallest blood vessel. उसका साइज डिस्क लाइक होगा, तो जिस टाइम पे आरबीसी डिस्क लाइक शेप हो जाएगा, it is very flexible to travel. It is very flexible to travel through a smallest blood vessel also. Smallest blood vessel also. तो ये डिजीज में क्या होता है? एबनॉर्मल क्रिस्चियन शेप रिजेंबल सिकल मींस इसका जो डिस्क लाइक होता है, डिस्क लाइक आरबीसी इज कॉल्ड एज सिकल शेप. सिकल शेप. So this type of RBC having the more flexibility than the normal RBC. More flexibility than the normal RBC. This type of
red cell can travel through a smallest blood vessel. So sickle cell anemia means in this anemia, the RBC become sickle shaped, and they are more flexible to travel through a small blood vessel. And also in that RBC, hemoglobin concentration is very low. अभी आओ थैलासीमिया क्या होता है? थैलासीमिया क्या? ये वन टाइप ऑफ एनीमिया, बट दिस इज ऑल्सो ए इनहेरिटेड और हेरिडिटरी डिसऑर्डर. यहाँ पे क्या होगा मालूम है? यहाँ पे तुम्हारा हम लोग का हीमोग्लोबिन में कितना चेन है? एनी आइडिया? हीमोग्लोबिन के कितना चेन है? सुमन सौरभ. सर ऑप्शन दीजिएगा तो बता देंगे सर. 4, 5, 6. 4. नाम बोलो चेन क्या? ओ चेन सर वही ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो था 4. वेरी गुड. अल्फा बीटा गामा. देखो हीमोग्लोबिन में 4 चेन रहता है. अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन. तो यहाँ पे तो थैलासीमिया क्या होगा? हीमोग्लोबिन का आइदर तुमका अल्फा और बीटा चेन का एब्नॉर्मलिटी होगा, मतलब चेन फॉर्म नहीं हो पाएगा. तो हीमोग्लोबिन में चेन फॉर्म नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा. तो जो कारण के लिए हम लोग का हीमोग्लोबिन का अल्फा और बीटा चेन का फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एनीमिया होगा. उस टाइप ऑफ एनीमिया को हम लोग क्या बोलूंगा? थैलासीमिया. So thalassemia is a inherited disorder characterized by abnormal formation of the alpha or beta chain of the hemoglobin. If there is a abnormality in the alpha chain, this is called alpha thalassemia. That is called alpha thalassemia. If there is a abnormality in the beta chain, that is called beta thalassemia. So in that case, what will happen? Large number of the red blood cells being destroyed, which leads to anemia. Means if there is a formation of the abnormal alpha or beta chain, then it will lead to destroy the large number of the red blood corpuscles, which ultimately lead to anemia. So this type of anemia is called as thalassemia. Means in a single word, the anemia which is mainly due to the abnormal chain formation, either alpha or beta, is called as thalassemia. These are two types: alpha thalassemia and beta thalassemia. Alpha thalassemia means the anemia in which there is a defect in alpha chain of hemoglobin. In case of beta thalassemia means the anemia in which defect in beta chain of hemoglobin. That is called beta thalassemia. So these are the some important anemia which we are discussing. अंशु क्या अभी ज्वाइन कर रहा है, क्लास खत्म होने वाला है. अभी बोलो यार, कोई किसी का कोई डाउट है? उमाशंकर प्रभु, डाउट पूछो. स्क्रीनशॉट ले लेना ये. किसी का कोई डाउट है? सब लोग समझ गया. अभी पूछूंगा तो एक ही आंसर. सर बोलो. ये है ना सर, नंबर 1 में साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लिएशन डिफेक्ट. हाँ आ रहा वो, बोलो. ये एक बार समझा दीजिए सर. कौन सा? आप फिर बोलो. साइटोप्लाज्मिक ये मैचुरेशन डिफेक्ट. जी नंबर 1. हाँ, साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन. हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा,
एक्चुअली रेड ब्लड कर्पसल फॉर्मेशन होने का पहले हम लोग को बहुत सारा सेल देखा स्टार्टिंग जो आरबीसी उत्पन्न होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो आरबीसी पहले का कौन सा सेल रहेगा, उसको बोलता है स्टेम सेल। जो स्टेम सेल होता है ना, हॉट सेल का क्या होता है, साइटोप्लाज्म। हॉट सेल का ही साइटोप्लाज्म होता है, आरबीसी का भी साइटोप्लाज्म होगा। अभी देखो, जिस टाइम पे आरबीसी का साइटोप्लाज्म में आयरन का मात्रा कम होगा, ठीक, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलूंगा, आयरन आयरन का मात्रा कम होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट यहाँ पे दो टाइप होता है, यहाँ पे दो टाइप होता है। एक डेफिशिएंट हीम सिंथेसिस मींस आयरन का कमी होगा, तो आयरन का कमी होगा तो क्या होगा, वहाँ का हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो हम लोग क्लास में बताया था। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया